Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. अ वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द डे 2 और मैं निकल रहा हूँ राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, जहाँ से मैं रॉस और नॉर्थ वे के लिए बोट लेने वाला हूँ। नॉर्थ वे के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ को लेके एक्साइटेड हूँ, इट्स नॉट वाटर एक्टिविटीज़ एंड आई विल टेल यू जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी जल्दी से ऑटो पकड़ते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी 8 o'clock। जैसे एस्ट्रोनॉट लोग हेलमेट पहनते हैं वैसे इक्विपमेंट होगा, शोल्डर लेवल तक कवर्ड होगा। 5 से 20 मीटर दूर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, कंटूर बनाएंगे जिस पर 2 लैडर है, उसके थ्रू आपको सी बेड में उतारा जाएगा। अब ये जैसे नॉर्मली यहाँ पर वॉक करते हो एंड ब्रीथ करते हो। तो टिकट ले लिया है, 770 रुपीज़ इज़ फॉर रॉस एंड नॉर्थ वे। और अगर आपको स्नोकलिंग या जेट स्की करनी है तो पहले से टिकट लेकर रखो ड्यू में, क्योंकि अगर ज़्यादा रश होगा तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बोट टू कम एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स इधर रॉस और नॉर्थ वे फर्स्ट। देखते हैं। काफ़ी बादल है आज और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज सनराइज या सनसेट नहीं देखना है। फाइनली आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द बोट जो कि मुझे रॉस या नॉर्थ वे लेके जाएगी। नॉर्थ वे में देयर इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच आई वाज टोल्ड, और वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ है, मैंने अपने आप को सिर्फ एक में एनरोल करवाया है, वो है स्नोकलिंग। सी वॉक देख के मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूबा कर चुका हूँ और स्कूबा मैं करूँगा नील या हैवलॉक में। पैरासीलिंग इट्स क्वाइट बोरिंग अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। So I got the funny life jacket and I'm all set to go to Ross. So I've reached to Ross Island, जिसका अभी नया नाम हो चुका है नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। वो लोग आपको 1.25 घंटा देते हैं एंड आई वाज टोल्ड कि 40 मिनट भी काफ़ी है। लेट्स सी कितना मिनट काफ़ी है। तो मैं हूँ अब रॉस आइलैंड में, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप भी कहते हैं। एक टाइम पर ये ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर होता था और जापानीज़ ने इसे वर्ल्ड वॉर 2 में एक्वायर कर लिया था। 1979 में इट वाज गिवन बैक टू इंडियन नेवी। सुनामी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी यहाँ पर, बट अभी ये एक मस्ट विजिट साइट सीइंग पॉइंट बन चुका है। Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. रॉस आइलैंड में एडमिन क्वार्टर्स और दूसरी बिल्डिंग से खंडरों में भेड़ों की शाखाएं कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई है कि लगता है चिपको आंदोलन तो यही हुआ था। इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर योर इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स। इट्स अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिक आइलैंड और काफ़ी ग्रीनरी है। लव इट कि यहाँ पर हिरणों को कोई डर नहीं होता हम लोगों से। Tonight will turn minutes into days, and nothing's gonna make me look away. Peel off a layer and breathe. Lift up your head and lead. Count the stars before you leave. Save a kiss, pretty please. Try to reminisce over me. Know that I will cherish your memories.
दियर चर्च। गर्मी तो काफ़ी है, बट क्या ही सही आर्किटेक्चर बनाए हुए हैं। रूइंस होने के बावजूद जब ये इतना सुंदर दिख रहा है, अगर रूइंस नहीं होते और रियल में होते तो अलग ही लेवल होता। और ये यहाँ का पावर हाउस है, प्रोबेबली द मोस्ट सीनिक पावर हाउस आई हैव एवर सीन। Tonight we'll turn minutes into days, and nothing's gonna make me look away. Lover, friend, real or pretend. एंड दिस इज़ वेयर दे डू लाइट एंड साउंड शो, जो मोस्ट लाइकली मैं आज करने वाला हूँ। बोट वाले भैया ने बोला था कि 40 मिनट काफ़ी होंगे, मुझे 1 घंटा हो चुका है और अभी तक मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है। शायद मैं काफ़ी स्लो हो जाता हूँ जब मुझे इतनी अच्छी ब्यूटी दिखती है। अगर रूइंस ही इतने सुंदर है तो सोचो जब ये रियलिटी में होगा बिफोर 1940s तो कितना सुंदर होगा। आई एम एन्जॉइंग इट। कमिंग हेयर एट रॉस वॉज टोटली वर्थ इट। आई होप नॉर्थ वे भी डिसअपॉइंट ना करें। 1.5 घंटा हो चुका है एंड नाउ जस्ट इन टाइम आई एम रनिंग बैक टूवर्ड्स द बोट और फिर वहाँ से नॉर्थ वे के लिए निकलना है। We'll turn minutes into days. Tonight we'll turn minutes however we end. Tonight we'll turn minutes into days. I've reached to North Bay now. Apparently drone flying is not allowed. अब नॉर्थ वे में आए हो तो कोई तो एक्टिविटी करोगे ही, तो टाइम हो गया है चेंज करके स्नोकलिंग करने का। नॉर्थ वे बीच पर काफ़ी दूर तक शैलो वाटर है और ये जगह फेमस है फॉर द लार्जेस्ट लाइव कोरल रीफ्स के लिए। तो अगर यहाँ आए हो तो कम से कम एक वाटर एक्टिविटी करके इन लाइव कोरल्स को देखना तो बनता ही है। आफ्टर एन अमेजिंग स्नोकलिंग इट्स टाइम फॉर सम मैगी। अब अगर आइलैंड पर आए हो तो मैगी खाना बनता है। सो स्नोकलिंग करने के बाद और मैगी खाने के बाद में आई जस्ट ग्रैब्ड सम ऑरेंज जूस और अब मैं जा रहा हूँ लाइट हाउस देखने के लिए, जो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है नॉर्थ वे में। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़, अगर आप 20 रुपये का पुराना वाला नोट देखोगे तो उसमें जो फ़ोटो है वो नॉर्थ वे आइलैंड की है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई वॉज सो इंट्रिग्ड टू कम हेयर। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द लाइट हाउस। लेट्स चेक आउट अगर ऊपर जाने को मिलता है नहीं मिलता है, बट ट्राई करना तो बनता है। आई हैव 40 मिनट विथ मी, उसके बाद में बोट विल टेक मी बैक टू पोर्ट ब्लेयर।
तो लाइट हाउस तो पहुंच गया पर बंद है, तो अब मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि लाइट हाउस खुलेगा आधे घंटे बाद और मेरी बोट निकलने वाली है 20 मिनट बाद। हार्ड लक, कोई बात नहीं, कहीं और जाएंगे। सो आई फाउंड आउट कि अगर मुझे 20 रुपये के नोट के पीछे जो फ़ोटो लगी होती है उसकी इमेज अच्छी देखनी है नॉर्थ वे की, देन माउंट हैरियट इज़ द बेटर प्लेस टू गो। उसका भी अभी नया नामकरण हो गया है जो मुझे भी याद नहीं है। आई विल मेंशन द नेम हेयर। अभी इट्स टाइम फॉर मी टू गो बैक टू द जेटी एंड देन वहाँ से फिर पोर्ट ब्लेयर। इफ़ पॉसिबल आई विल कम बैक टू रॉस फॉर द लाइट एंड साउंड शो। सो हेडिंग बैक टू रॉस, 370 रुपये का टिकट फॉर द लाइट एंड साउंड शो। बैक टू रॉस ट्वाइस ऑन द सेम डे। अगर आपके पास समय कम है और अगर आप नील और हैवलॉक आइलैंड भी जा रहे हो, देन हेयर इज़ अ टिप फॉर यू। स्किप द मॉर्निंग ट्रिप टू रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ वे और सिर्फ रॉस का लाइट एंड साउंड शो का ही टिकट बुक करो। दिन में पोर्ट ब्लेयर घूम के आप आराम से 3:30-4 बजे तक यहाँ पहुँच जाओ रॉस के लिए, और पहुँचने के बाद में शो स्टार्ट होने से पहले आपको 40-50 मिनट मिल जाएंगे रॉस आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी सी है। उसके बाद भी वक्तन फवक्तन कहीं कहीं पुर्तगाली, डच, चीनी, फ्रांसीसी और डैनिश यात्रियों ने इन जजीरों का जिक्र किया है। जो गोलियों और फांसी से बच गए वो मलेरिया, पेचिश और नमूनिया जैसी बीमारी से मारे गए। तो रॉस और नॉर्थ वे को करने के बाद में आई विल कम बैक नेक्स्ट वीक विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑफ अंडमान। बट यू डोंट गो एनीवेयर बिफोर यू क्लिक ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। नेक्स्ट वीक वापस मिलते हैं अंडमान से। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फिर मिलेंगे।